Ambad is saying, I have what I think is a great startup idea, but it's a tech startup and it's generally quite technical. How do I communicate, pitch this effectively to investors? I think that's a struggle that you do with our startups also. They think their idea is too technical. Like Fiza so beautifully explained an idea which would be difficult for other people to understand crowdfunding. Exactly. Explain. So how do people go about pitching that? These are communication strategies, ठीक है? And we can explain the toughest concept, चाहे वो जितना भी technical हो, in simple terms. It is doable. Now, a business plan is a different, it's a separate ballgame, ठीक है? उसको side पे रखें, उसमें ज़्यादा technicalities जाती हैं. लेकिन जो एक pitch है, जो आप orally deliver कर रहे हैं, उसमें एक जगह आती है जहां आपने बहुत टेक्निकल होना है और आपने टेक्निकलिटीज एक्सप्लेन करनी है एंड दोज यू एक्सप्लेन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ योर एरिया सो आपकी वो जार्गन होगी वो आप वर्ड्स यूज उस एरिया में करेंगे लेकिन अगर आप थ्रू आउट उसी तरह बोलेंगे थ्रू आउट एक टेक्निकल स्टैंस रखेंगे तो देन इट्स अ पिच व्हिच विल जस्ट it's not going to be absorbed by anyone. So the concept is to take a storytelling approach, right? Like Fiza here did, right? And also Usman, he had a story as well for you. So you have to turn your idea into a human idea. How are human beings going to react to your idea? तो आप सोचें कि मैं एक छोटे बच्चे को बता रहा हूँ कि मेरा आइडिया क्या है और उस छोटे बच्चे से बात कीजिए जब आप उस छोटे से बच्चे से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि एक दो चांसेस है एक लगेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता उसका मतलब है कि आपको आइडिया खुद क्लियर इतना नहीं है दूसरा है कि आपको एकदम समझ आ जाएगी कि ओह it is doable and I can make it very very easy to understand so talk to a child sit in front of a mirror imagine that your reflection is that of a child like 6-7-year-old or a 10-year-old even and then you explain your idea to them. Once you've done that, then you'll have the language to use to develop your pitch. और फिर उसके बाद वो आप जो सारी चीजें हमने बोली हैं स्टेप बाय स्टेप लेकिन हाँ टेक्निकलिटीज की एक जगह है और वहां पे वो आनी जरूरी है लेकिन उनको भी हम क्या करते हैं कि कैटेगराइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो उससे फिर वो क्लैरिटी आ जाती है आपकी पिच कई जो शुरू में सोचते हैं टेक्निकलिटी को डालने का वो sometimes closes you from no beginning is not for that you see your beginning is your most important part of your pitch and if you start with technicalities you're going to put number one people to sleep and बाकी तो फिर भूल ही जाए ना जो सो गए तो फिर तो कुछ याद नहीं रहा ना राइट तो वो उसको बिगिन करने के बड़े तरीके होते हैं हमारे पास बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं I've shared some with these guys and technicalities you build up but the world nowadays is such that we want stories right it's a storytelling approach it's a human approach you have to reach people you don't just tell them your idea you reach them right so इसलिए simplify it talk to yourself and see where you can take it from बहुत funny होता है ना sometimes people come and say I don't have a story but when you talk to them there's always a story there's always a story always a story I think that's the fun part of it वही तो always a story यही होता है ये इसी तरह होता है ना कि जो आप कहते हो कि जी आप अपनी बताएं कि जी what's so great about you तो nothing तो वो when you get talking there's so much there's so much and not so great so exactly हमें